Hari Om, all of you. I take it we are all ready for Satsang. We're going to begin shortly. Sprinkle water on all the puja goods and on yourselves. Om apavitraha pavitro va sarvavasthang gatopi va yasmaret pundarikaksham sabahya bhyantaraha shuchihi. Sip water from the palm of the right hand, once with each mantra. Om Keshavaya Namaha. Om Narayanaya Namaha. Om Madhavaya Namaha. Rinse your hands. Om Rishikeshaya Namaha. Om Govindaya Namaha. Om Madhusudanaya Namaha. Put on a kusri on the ring finger of the right hand. Om Pavitre Stho Vaishnavyo Saviturva Prasva Utpunamya Chidrena Pavitrena Suryasya Rashmabhi Tasya Te Pavitra Pade Pavitra Putasya Yatakama Pune Tachakeyam. Apply Chandan Tika to your forehead using the thumb of the right hand. Om Chandanam Bandhute Nityam Pavitram Papanashanam Apadam Harite Nityam Lakshmir Vasatu Sarvada. Light the chirag. Om Bodhipatvam Brahmarupa Andhakara Nivaraka Imamayaktang Pujang Grihastejo Pravardhaya. Om Deepaya Namaha. We'll begin with Ved mantras. And again, it would be nice if all of you can join in your own homes, reciting these powerful mantras, which helps to purify the atmosphere. The vibrations are so powerful, it will have a positive influence on everybody. Om. 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 Gurur Brahma, Gurur Vishnu, Gurur Devo Maheshwara, Guru Sakshat Parabrahma, Tasmai Shri Gurave Namaha. Dhyan Moolam Gurur Murti, Puja Moolam Guru Padam, Mantra Moolam Gurur Vakyam, Moksha Moolam Guru Kripa. Om Swasti na Indro Vridashavaha, Swasti na Pusha Vishwavedaha, Swasti na Starik Shorarishtanemi, Swasti no Brihaspati'r Dadhatu. Om Payah Prithivyam Payah Oshadhishu Payo Divyantarikshe Payodhaha Payaswati Pradishaha Santu Mahyam. Om Vishnoratamasi Vishnu Snaptresto Vishnu Surasi Vishnu Dhruvasi Vaishnavamasi Vishnavitva. Om Agnir Devata Vato Devata Suryo Devata Chandrama Devata Vasavo Devata Rutra Devata Ditya Devata Maruto Devata Vishwe Deva Devata Brihaspatir Devatendro Devata Varuno Devata.
ओम द्योः शान्तिरन्तरिक्षगुं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वगुं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि ओम विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्न आसुव ओम आनो भद्रः क्रतवो यन्तु विश्वतो तब्धासु अपरितास उद्भिदः देवानो यथा सदमिद्वृधे असन्न प्रायुवो रक्षितारो दिवे दिवे ओम देवानां भद्र सुमतिर्युजूयतां देवानां रातिरभिनो निवर्तताम् देवानां सख्यम् उपसेदिमा वयं देवान आयुः प्रतिरन्तु जीवसे ओम तान् पूर्वया निविदाहुमहे वयं भगं मित्रम् अदितिं दक्षमस्त्रिधम् अर्यमनं वरुणगुं सोममश्विना सरस्वती नः सुभगामयस्करात् ओम तन्नो वातो मयो भुवातु भेषजं तन्माता पृथिवी तत्पिता द्योः तद्ग्रावाणः सोमसुतो मयो भुवस्तदश्विना शृणुतन्धिष्ण्यायुवम् ओम तमीशानं जगतस्तस्तुष्पक्षस्पतिं धियन् जिन्वमवसे भूमहे वयं पूषानो यथा वेद साम सद्वृदे रक्षिता पायुर्दब्धः स्वस्तये ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्योररिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु ओम पृषदश्वा मरुतः पृश्निमातरः शुभं यावानो विदथेषु जग्मयः अग्निजिह्वा मनवः सूरचक्षसो विश्वेनो देवा हवसागमन्निः ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देव भद्रं पश्येम आक्षभिर्यजत्रः स्थिरैरङ्गैस्तुष्ट्वा वंशस्तनुभिर्व्यशेमहि देवहितं यदायुः ओम शतमिन्नु शरदो अन्तिदेवायत्राणश्चक्र जरसन्तनूनां पुत्रासो यत्र पितरो भवन्ति मानो मध्यारि ऋषितार्युर्गन्तोः ओम अदितिर्द्योर अदितिर अंतरिक्षम अदितिर माता स पिता स पुत्रः विश्वे देवा अदितिः पंचजना अदितिर्जातम् अदितिर्जनित्वम् ओम ऋचं वाचं प्रपद्ये मनो यजु प्रपद्ये साम प्राणं प्रपद्ये चक्षुश्रोत्रं प्रपद्ये वागोजः सहौजो मयि प्राणपानौ ओम तं पत्नीभिरनुगच्छेम देवः पुत्रैर्भ्रातृभिरुत वा हिरण्यः नाकं गृभनानः सुकृतस्य लोके तृतीये पृष्ठे अधिरोचने दिवः ओम आयुष्यं वर्चस्य गुं रायस्पोषमुद्भिदम् इदगुं हिरण्यं वर्चस्व जैत्राय विशतात्माम् ओम द्योः शान्तिरन्तरिक्षगुं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वगुं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि ओम यतो यतः समीहसे ततो नो अभयं कुरु शन्नः कुरु प्रजाभ्यो भयन्न पशुभ्यः
ओम शांति शांति सुशांतिर्भवतु। ओम हे रंब त्वमेषे हि अंबिका त्र्यंबकात्मज सिद्धि बुद्धि पतित्रक्ष लक्ष लाभ पितुः पितः नागास्य नागहार त्वं गणराज चतुर्भुज भूषितः स्वायुधे दिव्ये पाशांकुश परश्वधे आवाहयामि पूजार्थं रक्षार्थं च मम कृतो इहागत्य गृहाण त्वं पूजां कर्तुं च रक्ष मे। ओम मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयुक्तमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये अंजनीगर्भसम्भूतं कपीन्द्रं सचिवोत्तमं रामप्रियं नमस्तुभ्यं हनुमान रक्ष सर्वदा। ओम ध्यायेत् आजानुबाहुं धृतशरधनुषं बद्धपद्मासनस्थं पीतं वासवसानं नवकमलदलस्पर्धिनेत्रं प्रसन्नं वामाङ्कारूढ सीतामुखकमलमिललोचनं नीरदाभं नानालङ्कारदीप्तं ददत गुरुजटामण्डलं रामचन्द्रम्। ओम यं ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्रमरुतः स्तुनुवन्ति दिव्यैस्तवः वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैर्गायन्ति यं सामगः ध्यानावस्थितः तत्कतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुः सुरासुरगण देवाय तस्मै नमः। ओम वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं मुखं करोति वाचालं पंगुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। ओम शांतं पद्मासनस्थं शशधरमुकुटं पंचवक्त्रं त्रिनेत्रं शूलं वज्रं च खड्गं परुषम् अभयदं दक्षिणाङ्गे वहन्तं नागपाशं च घण्टां डमरुकसहितं अंकुशं वामभागे नाना अलङ्कारदीप्तं स्फटिकमणिनिभं पार्वतीशं नमामि। ओम या कुन्देन्दु तुषारहार धवला या शुभ्र वस्त्रावृता या वीणा वरदंड मंडितकर या श्वेत पद्मासन या ब्रह्मा अच्युत शंकर प्रभृतिभिर्देवैः सदा वंदिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापः। ओम लक्ष्मी क्षीर समुद्र राजतनयां श्रीरंगधामेश्वरीं दासीभूत समस्त देव वनितां लोकैक दीपांकुरां श्रीमन्मंद कटाक्ष लब्ध विभव ब्रह्मेन्द्र गंगाधरान् तांत्रैलोक्य कुटुंबिनीं सरसिजां वंदे मुकुंद प्रियां। ओम सीताराम पवन सुत हनुमान राधे कृष्ण की जय। चालीसा नाउ। श्री गुरु चरण सरोज रजा निज मन मुखर सुधार बरनो रघुबर विमल यशा जोधायक फल चां बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीश तिहु लोक उजागर रामदूत अतुलित बल धामा अंजनी पुत्र पवन सुत नामा महावीर विक्रम बजरंगी कुमति निवार सुमति के संगे कंचन वरन बिराज सुहेशा
कानन कुंडल कुंचट केशा, हाथ वज्र और ध्वजा विराजे, कांधे मूज जनेऊ साजे, शंकर सुवन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगवंदन, विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करिबे को आतुर, प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया, सूक्ष्म रूप धरि सियाही दिखावा, विकट रूप धरि लंका जरावा, भीम रूप धरि असुर संहारी, रामचंद्र की काज सवारी, लाही सजीवन लखन जियाई, श्री रघुवीर हर्ष उर लाई, रघुपति कीनी बहुत बड़ाई, तुम मम प्रिय भरत सम भाई, सहस बदन तुम्हारो यश गावे, अस कहि श्रीपति कंठ लगावे, सनकादिक ब्रह्मादि मुनीषा, नारद सारद सहिषाईरा, यम कुबेर दिक्पाल जहाते, कवि गोविद कह सखी कहाते, तुम उपकार सुग्रीव ही कीना, राम मिलाए राजपद दीना, तुम्हारो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भई सब जग जाना, युग सहस्त्रयो जन पर भानु, ली होता ही माँ दुर्फल जानु, प्रभु मुद्रिका मेल मुख माही, चल दिलांद गही अचरज नाही, दुर्गम काज जगत के जेते, सुखम अनुग्रह तुम्हारे देते, राम दुआरे तुम रखवारे, होतन अज्ञा बिन पैसारे, सब सुख लहे तुम्हारे शरणा, तुम राशत काहू को डरना, आपन तेज संहारो आपे, तीनों लोक हापते कापे, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे, नाशे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा, संकट से हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे, सब पर राम तपस्वी राजा, तिनके काज सकल तुम साजा, और मनोरथ जो को हिलावे, तासु अमित जीवन फल पावे, चारों युग पर ताप तुम्हारा, हे प्रसिद्ध जगत उजियारा, साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे, अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, असवर दीन जानकी ही माता, राम रसायन तुम्हारे पासा, सदा रघु रघुपति के दासा, तुम्हारे भजन राम को पावे, जन्म जन्म के दुख विसरावे, अंत काल रघुपतिपुर जाई, जहाँ जन्म हरि भक्त की आवे, और देवता चित्त ना धरही, हनुमत से ही रव सुख करही, संकट हरि मिटे सब पीरा, जो सुमिरे हनुमत बलबीरा, जय 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 हनुमान गुसाए, कृपा करहु गुरुदेव के नाये, जो सतवार पाठ कर कोई, छूटे बंदी महासुख जो होई, जो यहाँ पर हनुमान चालीसा, होय सिद्धि साखी गौरी सा, तुलसीदास सदा हरि चेहरा, की जय नाथ हृदय महादेरा, पवन तनय संकट हरना, मंगल मूर्ति रूप, राम लखन सीता सहित, हृदय बसहु सुर भूप, सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय, शंकर हरिओम। ओम ओम ओम। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम, रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन
सीताराम सीताराम जय सीताराम भज मन प्यारे सीताराम रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम ईश्वर अल्लाह तेरो नाम सबको सन्मति दे भगवान ईश्वर अल्लाह तेरो नाम सबको सन्मति दे भगवान रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम रघुपति राघव राजा राम राजा राम राजा राम रघुपति राघव राजा राम राजा राम राजा राम रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम राम राम जय राम 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 जय सीताराम अयोध्यावासी राम नमो गोकुलवासी कृष्ण नमो राम 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 सीताराम राम 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 सीताराम रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम रघुपति राघव राजा राम राजा राम राजा राम रघुपति राघव राजा राम राजा राम राजा राम रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम जय जय राम गोविंद हरे हरे जय जय राम गोविंद हरे हरे गोविंद हरि हरि मुकुंद हरि हरि गोविंद हरि हरि मुकुंद हरि हरि रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम ओम सीताराम पवन सुत हनुमान राधे कृष्ण की जय। ओम नटवर नागर नंदा भजो रे मन गोविंदा नटवर नागर नंदा भजो रे मन गोविंदा नटवर नागर नंदा भजो रे मन गोविंदा तू ही नटवर तू ही नागर तू ही नटवर तू ही नागर तू ही पाल मुकुंदा भजो रे मन गोविंदा तू ही पाल मुकुंद भजो रे मन गोविंदा नटवर नागर नंदा भजो रे मन गोविंदा नटवर नागर नंदा भजो रे मन गोपाला तू ही नटवर तू ही नागर तू ही नटवर तू ही नागर तू ही पाल मुकुंदा भजो रे मन गोपाला तू ही पाल मुकुंदा भजो रे मन गोपाला नटवर नागर नंदा भजो रे मन गोविंदा नटवर नागर नंदा भजो रे मन गोविंदा ओम सीताराम पवन सुत हनुमान राधे कृष्ण की जय। Jai Shri Krishna. We're now going to have Gita part, and this evening we are looking at chapter 2, verse 57.
Yaha sarvatra anabhisnehas tat tattva prapya shubha shubham na abhinandanti na dveshti tasya pragya pratishtitaha. We'll do that again. Yaha sarvatra nibhisnehas tat tat prapya shubha shubham nabhinandati na dveshti tasya pragya pratishtitaha. So in this verse, here, Sri Krishna Bhagwan is saying that a person my apologies for that, a person who is everywhere without attachment. So the word sarvatra means everywhere. So a person who is everywhere without attachment, who neither rejoices nor hates, such a person is established in wisdom. So in the previous verses, Sri Krishna spoke about this perfect being, this perfect person. And we may have possibly got the impression that a person of perfection is inactive and is insensitive. So maybe that's the impression we may have got, that to be this perfect person, you have to be inactive and you have to be insensitive to what is happening around you. But now in this verse, we feel that Sri Krishna is trying to correct that possible impression that we may have had. So he uses the word sarvatra. The word sarvatra, as I said, means everywhere. So this perfect person, this perfect one, Krishna Bhagwan is saying he is a person that is everywhere. In other words, the perfect person is dynamic, he's not inactive. And you'll find that such a person is very much in contact with the world like everyone else. So, in other words, being a perfect individual, being a perfect yogi, does not mean that you have to become a recluse, that we have to leave our homes and go and sit in some deep part of the forest. In fact, one of the central messages of the Bhagavad Gita is that one can attain moksha, one can attain liberation, one can get through this world, material world, without having to take sannyas in the way in which people leave their household and go away into deep ashrams to meditate. What Bhagavad Gita is saying to us is that a person can still be a perfect yogi, a perfect being, yet he or she can remain in this world. So the perfect person that is being described in Bhagavad Gita is a person who is very much in contact with the world, like anyone else. Okay. The difference, however, between this perfect person and the average person lies in the mode of contact with objects and beings of the world. Right? So you'll find that the perfect person makes contact with the objects. The perfect person will make contact with other beings in the world, but such a person does not get attached. Whereas the average person lives a life
of extreme attachment to all the objects and to all the beings in the world. So a perfect person then does not fall prey to mental fluctuations. So, daily we go through mental fluctuations. There are times when we like somebody, there are times when we dislike somebody. There are times when I like something, there are times when I hate something. There are times when I react positively to something, there are times when I react negatively to something. These mental fluctuations don't affect the perfect person. That's what this verse is talking about. So such a person is not excited by unpleasant, nor is he excited by pleasant situations, by unpleasant or pleasant events, or by pleasant or unpleasant environments. None of these things will have an impact on this person. So you'll find that for such a person, heat and cold, war and peace, birth and death, none of these things will disturb this perfect person. Right? And somewhere in Bhagavad Gita, and perhaps I think it's maybe in chapter 2 itself, Krishna Bhagwan refers to the Sthit Pragya. The Sthit Pragya is very fixed in his, in whatever he or she is doing. Now, one way of understanding this verse about how it is that the person who is everywhere, because Krishna Bhagwan says, Sarvatra anibhisneha. He's everywhere, yet such a person is without attachment. Anabhisneha. How is that possible? So I read an example that was given by one commentator once. He was writing a commentary on this verse. And he used an example from the corporate world. So he used a corporate example to explain. So you see what corporates sometimes do. They employ a consultant. So they hire a consultant for 3 months to carry out a particular assignment. This consultant then comes in. He does whatever she is supposed to do, submits her report, and moves on to the next assignment. She doesn't get involved in office politics. Now look at this versus a permanent employee who gets a similar assignment. And what happens to that permanent employee? He or she gets stuck in the job. And they get entangled in all kinds of office politics. The consultant does her work. She doesn't get entangled in any kind of office politics. So that is the perfect being. The perfect being is in the world, is doing the assignment, is submitting the report, but doesn't get entangled in the work. He doesn't get attached to the things. So in this verse then, Krishna Bhagwan is alluding to the fact that we can still be part of this world, and yet we can aim for perfection, and we can become perfect beings. Okay? So we'll stop the katha for this evening over here. Jai Sri Krishna. अच्छा रामायण पाठ होगा। आज हम लोग बालकांड दोहा 112, बालकांड दोहा 112 we are reading today. जेहि सुमिरत सिद्धि होय सीताराम, गणनायक करिबर बदन, करो अनुग्रह सोय सीताराम, बुद्धि राशि शुभ गुण सदन, मूक होय बाचाल सीताराम, पंगु चढ़ई गिरिवर गहन, जासु कृपा सुदयाल सीताराम, द्रवो सकल कलिमल दहन, नील सरोरु श्याम सीताराम, तरुण अरुण बारिज नयन, करो सुमम उरधाम सीताराम, सदा क्षीर सागर शयन,
कुंद इंदु समदेह सीताराम उमा रमन करुणा अयन जाहि दीन पर नेह सीताराम करो कृपा मर्दन भयना बंदो गुरु पद कंज सीताराम कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोहतम पुंज सीताराम जासु बचन रवि कर निकर सियावर रामचंद्र की जय पवन सुत हनुमान की जय उमापति महादेव की जय कथा आरंभ होत है सुनो वीर हनुमान आसन को प्रभु आइए सिया सखा सहित भगवान सियावर रामचंद्र की जय पवन सुत हनुमान की जय उमापति महादेव की जय। दोहा 112 बालकांड। राम कृपा ते पार्वती सपने हु तव मन पाही शोक मोह संदेह भ्रम मम विचार कछु नाहि सियावर रामचंद्र की जय पवन सुत हनुमान की जय उमापति महादेव की जय। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय तदपि आशंका कीन्हु सोई कहत सुनत सब कर हित होई जिन हरि कथा सुनी नहीं काना शौन रंध्र अहिमा भवन समाना नयननि संत दरस नहीं देखा लोचन मोर पंख कर लेखा ते सिर कटु तुम्बरी समतूला जेन नमत हरि कुर पद मूला ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय जिन हरि भगति हृदय नहीं आनी जीवन सब समान तेई प्राणी जो नहीं करई राम गुण गाना जीह सुधा दुर जीह समाना कुलिस कठोर निठुर सोई छाती सुनि हरि चरित न जो हर शाती गिरिजा सुनहु राम कै लीला सुरहित धनुज विमोहन शीला ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय राम कथा सुर धेनु सम सेवत सब सुख दानी सत समाज सुर लोक सब को न सुने अस जान सियावर रामचंद्र की जय पवन सुत हनुमान की जय उमापति महादेव की जय। So we continuing with this katha where Shivji is going to explain the Ram katha to Parvati, and before he begins with the katha proper, this is what he has to say: Ram kripa te Parvati sapne utav manamo mahi. He says that according to my thinking, Shivji says, according to what he thinks, Sri Ramji has got a great deal of kripa, a great deal of mercy, grace he showers on Parvati, because she, even in her dream, स्वप्न में भी शोक मोह और संदेह और भ्रम कुछ भी नहीं है, because she is not affected by this doubt and confusion and attachment even in her dream. So why then is she asking for this katha? So he says, फिर भी तुमने इसीलिए वही पुरानी शंका की है
कि इस प्रसंग के कहने सुनने से सबका कल्याण होगा. So he says, you have mentioned, you have recalled the old doubt that you had. In the previous katha, remember, in her past life, she had doubts about whether the Sri Ramchandraji, who was walking in the forest in search of Sita Mata and was overcome by sorrow, and was he the Lord to whom Lord Shiva was praying, or was he an ordinary human being? So she's presenting the same doubt again. And Shivji says, why is she presenting this doubt? Because she knows that the explanation of this katha will not only benefit her, it says, Sabka Kalyan Hoga. Everybody will benefit. It is the same katha that is being related again and again, but everybody is going to benefit. So this is a message for all of us. Ram Katha benefits everyone. Those who know it must still listen to it, because it doesn't say that it will only benefit those who do not know Ram Katha. It benefits everyone. Nobody is too wise or too knowledgeable to listen to Ram Katha, to listen to the kathas of Bhagwan. ये हम सब के लिए है. जितने बार हम सुनेंगे, उतना हमारा कल्याण बढ़ेगा. The more we listen to it, the more good fortune, the more blessings come into our lives. Then he continues to explain what type of people do not listen to this katha. Shaun Jinha Hari Katha Suni Nahi Kana. He who hasn't listened to this katha with his ears, who hasn't used his ears to listen to Ram Katha, Shaun Randhra Ahi Bhavan Samana. Ahi is a snake and Bhavan is a home. So the ears of that kind of person who hasn't listened to Ram Katha is similar to a snake hole. And a snake hole, you know, is full of poison, because the resident in a snake hole is poisonous. So he is saying that if you want to remove the poisons from our lives, then we must make sure that our ears listen to Ram Katha and thus make us purified. Right? नयननि संत दरस नहीं देखा, and those people जिन्होंने अपने नेत्रों से संतों के दर्शन नहीं किए, who haven't taken darshan of sadhus and sants, great souls who are advanced spiritually. If we do not get darshan of them, if we do not meet them, not only do we get darshan, but we should also serve them. And if we do not do that, then our eyes are actually useless. He says, उनके वे नेत्र मोर के पंखों पर दिखने वाली नकली आंखों की गिनती में है. Their eyes are equal to the false eyes that are found on the moor, on the peacock. Right? So those eyes in the peacock only serve a decorative purpose. So he is saying, Shivji is saying, that if you do not use your eyes to get darshan of sadhus and sants, to get darshan of Ram, Sita, Lakshman, to get darshan of Krishna Bhagwan in the mandirs, then our eyes are equal to just being a decorative item on the body. Yeah? और ते सिर कटु तुम बरी समतुला जे नमत हरि गुरु पद मूला. And that head, that person who does not bow his head to Sri Hari and to his guru, he doesn't bow in front of his guru or in front of
of Bhagwan, that head is like a karvi tumbi ke saman. Tumbi is a god, G-O-U-R-D, not Bhagwan. Like a pumpkin. Pumpkin is a god. Karela is a god, a bitter god, right? So it is, the head is like a hollow god. That means it doesn't serve any purpose. It's an empty vessel. The head is like an empty vessel. It doesn't have the mind and the brains to do intelligent things like bow in front of Bhagwan. जिन्हें हरि भगति हृदय नहीं आनी, जीवत सब समान ते पानी प्राणी. Right? So, जो भक्ति को अपने हृदय में स्थान नहीं दिया, वे प्राणी जीते हुए ही मुर्दे के समान है. So who has developed bhakti in his heart, bhakti to Bhagwan, he is like the walking dead, right? So he is the living dead. In other words, without bhakti in our hearts, all the activities that we engage in are worth nothing, because it is without any bhakti to Bhagwan. So remember, in Bhagavad Gita we read that whatever we do, whatever we say, all must be as an offering to Bhagwan. In summary, it says work must become worship, and work can only become worship if there is bhakti as the basis of all activity, right? So he goes on to say what type of jeeb, tongue. जो जीभ श्री रामचंद्र जी के गुणों का गान नहीं करती, वो मेढक की जीभ के समान है. So that tongue which is not used to sing the praises and the qualities of Sri Ram, that tongue is like the tongue of a medak. Medak is a frog. So, you know, the medak's tongue is used chiefly to cause harm to insects and other creatures that it eats. So if we do not use our tongue to sing Ram Nam, to sing the praises of Sri Ram, then the tongue is going to cause harm to others. It is going to speak harshly to others, speak gossip, and say things that will cause hurt to others. So that would be an abuse of the wonderful facility that Bhagwan has given us to speak. And that facility comes through the tongue. वह हृदय वज्र के समान कड़ा और निष्ठुर है, जो भगवान के चरित्र सुनकर हर्षित नहीं होता है. And that heart is hard and harsh and insensitive if it doesn't become happy when it hears Ram Katha, Bhagwan's Katha. So listening to Ram Katha and not becoming excited and happy about it is not of much value. It must excite us. It must make us happy. It must elevate our spirits. That is the benefit of Ram Katha. And you know, now with modern technology, we can all listen to Ram Katha and even watch the Ram Katha at a time that is convenient for all of us. You know, with YouTube and WhatsApp voice messages and all of this kind of things, we have these facilities, and therefore there is less of an excuse, or should I say there is no excuse not to listen to Ram Katha and enjoy it. I'm going to give you an example. You know, every morning we are sharing an extract from the Ramayana with a short explanation. And one of the people who receives this from me is a fairly young man, under 35, who lives in Johannesburg. And if I do not send it to him by 6:30 in the morning,
he sends me a reminder, Panditji, you didn't send Ramayana today. So you can see he is excited. He is looking forward to listening to Ram Katha. And that must be the attitude of all of us. We mustn't just receive these recordings and file it away. We must listen to it. We must enjoy it. That is the greatness of Ram Katha. We must be attracted to it all the time. Then he goes on to explain the greatness of the Ram Katha. Ram Katha Surdhenu Sama Sevat Sab Sukhdani. That Shri Ramchandra Ji ki Katha Kam Dhenu ke Saman Seva Karne se Sab Sukho ko Dene Wali hai. So this Ram Katha gives all kinds of anand, of bliss. But how, to who? Jo seva karne se. That means there is a condition that you must listen to this katha. You mustn't just store it away. You must listen to it, and not just listen, but you must apply what you learned from this katha into our lives. It must come into our lives. सत पुरुषों के समाज ही सब देवताओं के लोक है, ऐसा जानकर इसे कौन न सुनेगा. And Shivji says, knowing this greatness of the Ram Katha, who will not listen to it? He didn't use this word, I'm adding this. Perhaps he should have said, who is so foolish as to not want to listen to Ram Katha? When you know how beneficial it is, we should all want to listen to Bhagavad Katha. We'll conclude here. Katha visarjan hot hai, suno veer Hanuman, आसन को प्रभु जाइए, सिया सखा सहित भगवान, सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय. Om मुरलिए बजरे यमुना के तीर, मुरलिए बजरे यमुना के तीर, यमुना के तीर हो यमुना के तीर, यमुना के तीर हो यमुना के तीर, मुरलिए बजरे यमुना के तीर, मुरलिए बजरे यमुना के तीर. मुरली के धुन मेरा मन हर लीनो, मुरली के धुन मेरा मन हर लीनो, चित धरत नय धीर, चित धरत नय धीर, मुरली बजरे यमुना के तीर, मुरली बजरे यमुना के तीर, यमुना के तीर हो यमुना के तीर, यमुना के तीर हो यमुना के तीर, मुरली बजरे यमुना के तीर, मुरली बजरे यमुना के तीर. कारू कन्हैया करी कमरिया, कारू कन्हैया करी कमरिया, कारू यमुना के नीर, कारू यमुना के नीर, मुरली बजरे यमुना के तीर, मुरली बजरे यमुना के तीर. मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, चरण कमल पग शीर, मुरली बजरे यमुना के तीर, मुरली बजरे यमुना के तीर, यमुना के तीर हो यमुना के तीर, यमुना के तीर हो यमुना के तीर, मुरली बजरे यमुना के तीर, मुरली बजरे यमुना के तीर. ओम सीताराम पवन सुत हनुमान, राधे कृष्ण की जय.
अब नाई जी अब मुरे माई, राधे नी बंसी चुराई। अब नाई जी अब मुरे माई, राधे नी बंसी चुराई। इतने वचन सब सुनी यशोदा, नंगे पाँव चले आई। इतने वचन सब सुनी यशोदा, नंगे पाँव चले आई। राधा बेटी बंसी दे हो, बंसी में बसत मोर प्राणा, बंसी में बसत मोर प्राणा। राधा बेटी बंसी दे हो, बंसी में बसत मोर प्राण, बंसी में बसत मोर प्राण। अब नाई जी अब मोर माई, राधे नी बंसी चुराई। अब नाई जी अब मुरे माई, राधे नी बंसी चुराई। यशोदा मैया तोरे कन्हैया, माखन मोर चुराई, माखन मोर चुराई। यशोदा मैया तोरे कन्हैया, माखन मोर चुराई, हाँ माखन मोर चुराई। नाई जी अब मुर माई, राधे नी बंसी चुराई। अब नाई जी अब मुर माई, राधे नी बंसी चुराई। यशोदा मैया तोर कंदैया, मकटी मोरे चोरे, हाँ मटकी मोरे चोरे। यशोदा मैया तोर कंदैया, मटकी मोरे तोरे, हाँ मटकी मोरे तोरे। अब नाई जी अब मुरे माई, राधे नी बंसी चुराई। अब नाई जी अब मुरे माई, राधे नी बंसी चुराई। यशोदा मैया तोर कन्हैया, कलाई मोर मरोरे, कलाई मोरी मरोरे। यशोदा मैया तोरे कन्हैया, कलाई मोर मरोरे, कलाई मोर मरोरे। अब नाई जी अब मुरे माई, राधे नी बंसी चुराई। अब नाई जी अब मुरे माई, राधे नी बंसी चुराई, राधे नी बंसी चुराई, राधे ने बंसी चुराई। ओम सीताराम पवन सुत हनुमान, राधे कृष्ण की जय। ओम ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट, भक्त जनों के संकट जन में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। जो ध्यावे पल पावे, दुख विन से मन का, स्वामी दुख विन से मन का। सुख संपत्ति घरे आवे, सुख संपत्ति घरे आवे, काट मिटे तन का। ओम जय जगदीश हरे। माता पिता तुम मेरे, शरण कहूँ मैं किसकी, स्वामी शरण कहूँ मैं किसकी। तुम बिना और न दूजा, तुम बिना और न दूजा, आश करो जिसकी। ओम जय जगदीश हरे। तुम पूर्ण परमात्मा, तुम्हें अंतर्यामी, स्वामी तुम्हें अंतर्यामी। पार ब्रह्म परमेश्वर, पार ब्रह्म परमेश्वर, तुम सबके स्वामी। ओम जय जगदीश हरे। तुम करुणा के सागर, तुम पालन करता, स्वामी तुम पालन करता। मैं मूरख कल कामी, मैं मूरख कल कामी, कृपा करो भरता। ओम जय जगदीश हरे। तुम हो
हो एक अगोज, सबके प्राणपति स्वामी सबके प्राणपति। किस विधि मिलो दया में, किस विधि मिलो दया में, तुमको मैं कुमति। ओम जय जगदीश हरे, दीन बंधु दुख हरता, तुम रक्षक मेरे स्वामी तुम रक्षक मेरे। करुणा हस्त बढ़ाओ, करुणा हस्त बढ़ाओ, शरण पड़ा तेरी। ओम जय जगदीश हरे, विषय विकार मिटाओ, पाप हरो देवा स्वामी पाप हरो देवा। श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, संतन के सेवा। ओम जय जगदीश हरे, तन मन धन सब है तेरा स्वामी सब कुछ है तेरा। तेरा तुझको अर्पण, तेरा तुझको अर्पण प्यारा है मेरा। ओम जय जगदीश हरे, प्रेम सभा सब मिलकर निश दिन यही गाओ स्वामी, निश दिन यही गाओ। पार लगा दो नैया, पार लगा दो नैया, यही अरस गाओ। ओम जय जगदीश हरे, ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट, भक्त जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे, ओम जय जगदीश हरे, ओम जय जगदीश हरे। ॐ कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। ॐ मङ्गलं भगवान् विष्णु, मङ्गलं गरुत्वध्वजा, मङ्गलं पुण्डरीकाक्ष, मङ्गलाये तनोहरि। ॐ सर्वमङ्गलमङ्गल्ये शिवे सर्वार्धसाधिके, शरण्ये त्र्यम्बिके गौरी नारायणी नमोऽस्तुते, नारायणी नमोऽस्तुते, नारायणी नमोस्तुते। You may sprinkle water around your thali. Om yani kani cha papani janmantar kritani cha tani tani vinakshanti pradakshina pade pade. Om sarvesham swastir bhavatu, sarvesham shantir bhavatu, sarvesham purnam bhavatu, सर्वेषां मंगलं भवतु, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ असतो मा सद्गमय, तमस्यो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा अमृतं गमय। ॐ पूर्णमिदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमदच्यते, पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ अपराधः सहस्राणि गृह्णन्ते हर्मिषं मया, दास्योऽयमिति मां मत्वा क्षमस्व परमेश्वर। आवाहनं न जानामि, न जानामि विसर्जनं, पूजां चैव न जानामि, क्षमस्व परमेश्वर। अन्यथा शरणं नास्ति, त्वमेव शरणं मम, तस्मात् कारुण्यभावेन रक्ष्व त्वं परमेश्वर। ओम बोलो गणेश भगवान की जय, ओम सीताराम की जय, ओम लक्ष्मण जी की जय, ओम पवन पुत्र हनुमान की जय, ओम राधे कृष्ण भगवान की जय, ओम शिव शंकर पार्वती माता की जय, ओम दुर्गा काली सरस्वती लक्ष्मी माता की जय,
ओम गंगा यमुना सरयू गोदावरी माता की जय। ओम सब पितृदेव की जय। ओम सनातन धर्म की जय। ओम लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। ओम राधा माधव की जय। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव हर। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। जय दुर्गा माता।